Hello everyone, welcome to our YouTube channel Abhyaan Shipping, your gateway to global logistics. Before going into the very first episode of our channel, I want to give a brief introduction about our company, Abhyaan Shipping Services India Private Limited. At Abhyaan Shipping, we specialize in various services like custom clearance, freight forwarding, transportation and warehousing. इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे. We will try to provide you the insights about the various services or the various processes in the logistics. Today we are going to kicking off our very first episode, Ship Happens Freight Forwarding Edition. I am Anshika Vesh, joining in my colleague Nitesh Kambale. Today in today's episode we are going to break down the freight forwarding concept. What is freight forwarding? What are the different stakeholders involved in this process? And we are going to unveil many facts, truths, and many interesting information about this process. So stay tuned. Hello everyone, this is Nitesh Kamble and I have been working in this industry since 13 years and I have worked in multiple profiles as I have worked with shippers, I have worked with importers, I have worked with custom clearance who is a custom broker, and currently I am working as a pricing manager and handling a freight forwarding department. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेली बेसिस पे फ्रेट फॉरवर्डिंग कैसे होता है. सो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो एक पॉइंट से लेके वर्ल्ड के दूसरे पॉइंट तक उस चीज को पहुंचाया जाता है. वो है आपके शिपमेंट्स. सो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और मेरा इस इंडस्ट्री में जो जर्नी रहा वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा. क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शिपमेंट दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पर बहुत ही आसानी से डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे शिप हो, एयरप्लेन्स हो, ट्रक्स हो, बड़ी आसानी से पहुंच जाता है बिना चिंता किए? वो कौन लोग होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे होते हैं? दैट्स द मैजिक ऑफ द फ्रेट फॉरवर्डर्स. सो जैसा कि आज का हमारा पहला एडिशन है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एडिशन, तो नितेश, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट डज एक्चुअली फ्रेट फॉरवर्डर्स डू? What is their work? What is their profile? How they help our clients? आप क्या अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे? Okay, so before moving to the freight forwarding topic, first let's see what is logistics and which parties are involved. So as you must have heard the terms shipper, consignee, importer, exporter, buyer, seller, transporters, freight forwarders, custom brokers, and many more agencies are involved as per your shipment. So first let's see what is logistics. Logistics to move a one shipment from one place to another globally, that is called logistics, and these parties are involved at each stages, and without these stages your shipment cannot reach at the destination. So you need these services and you require them at every step. So what is freight forwarding? So freight forwarder is a entity who provides you end-to-end solutions. So as I explained what is a logistics, और आपका सवाल था फ्रेट फॉरवर्डिंग. सो लॉजिस्टिक्स ऐसा वाइड इंडस्ट्री है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं. आपको अगर एक शिपमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना है तो आपको ये मल्टीपल सर्विसेज की ज़रूरत लगेगी एंड दैट इज़ मैंडेटरी. सो विदाउट दैट यू कैन नॉट मूव योर शिपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर एक ऐसी एंटिटी होती है जो जिनका मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होता है. सो आपको हर एक सर्विस के लिए आपको हर एक जगह जाने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. सो यू कैन कॉन्टैक्ट द फ्रेट फॉरवर्डर and they can get your shipment cleared through custom clearance. They can arrange transportation on behalf of you. Even though if you have overseas services and you need to deliver the goods at a doorstep, then freight forwarders having contacts of overseas agents, shipping lines, and through them they can execute your shipment and they deliver the goods on time and efficient manner. That is the freight forwarding. ओके, तो जैसे आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग में अभी बताया कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, एंड यू मेंशन ट्रांसपोर्टर, कस्टम ब्रोकर, फ्रेट फॉरवर्डर. तो एज आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज. कस्टम ब्रोकर और फ्रेट फॉरवर्डर और ट्रांसपोर्टर, इन सब की डेफिनेशंस में एक थिन लाइन है बिकॉज ये सभी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बट क्या आप बता सकते हो कि फ्रेट फॉरवर्डर की
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, कस्टम ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर होती है और ट्रांसपोर्टर कहाँ पर अपना रोल प्ले करता है? कैन यू करेक्ट। एक्सप्लेन इट? यस। सो व्यूअर्स, आपने सुना होगा इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बायर, सेलर, शिपर, ऐसे वर्ड्स आपने इस इंडस्ट्री में सुने होंगे। सो आप में भी कंफ्यूज होते होंगे, बट ये वर्ड्स इजी है। बायर मतलब जो परचेस करता है, सेल जो सेल करता है, सेलर को ही हम एक्सपोर्टर बोलते हैं और बायर को हम इंपोर्टर बोलते हैं। और सिंस इट इज कॉल्ड ऑल्सो कंसाइनमेंट, सो कंसाइनमेंट से ये वर्ड इनोवेट हुआ है, कंसाइनी एंड कंसाइनर। सो इट हैज सेम मीनिंग। कंसाइनर मीन्स who is exporting or who is seller, and the consignee who is purchasing the goods. The first thing you have to keep in mind that we have to move our shipment from one place to another. Okay, so it is not possible on for individual basis that we can move that shipment or you can handle everything. Okay, so if you go to custom broker, if you go to transporter, and if you go separately to freight forwarder or shipping lines, you might end up with the huge losses, or maybe it won't be a cost effective. प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज Correct. अ पर्सन कैन नॉट डू Yes, एवरीथिंग। yes, correct, correct, या correct. So freight forwarder has, as I explained, freight forwarder having multiple contacts in industry. So you just hand over your shipment to them. So you can just sit, relax, and you don't have to worry about it. At doorstep, on by emails, by SMS, or as we have social media today, you'll get all the updates by sitting at one place. So that is what the freight forwarder helps you in all the manner. So when you give your shipment to any freight forwarder, so what is their first work? So they will first book the ocean freight. Okay. So it depends whether your shipment is LCL, whether shipment is FCL. You have to first identify that. According to that, they arranges the transportation. So transportation is not only like you have a small shipment and they will send the large truck or something like that. So the work of transporter is to arrange your goods in very cost effective manner. So if you have a small shipment, they will arrange as per the commodity, as per your shipments, whether it is LCL or FCL. FCL means if you have a container to export or container to import, so they will arrange the trailer accordingly, 20 feet or 40 feet. And if your shipment is LCL, so they will send the consolidated trucks or maybe one dedicated trucks to your factory to pick up the goods or deliver the goods to save your cost. So that is what the transporter do. ट्रांसपोर्टर डज ओके। Yes. And further we'll move to the custom clearance. ओके, So as you know that you and me cannot go and clear the क्लियर द shipment. शिप Okay, बिकॉज देयर आर because मेनी yes, कंप्लायंसेस एंड yes, एवरीथिंग। या yes, yes, correct. And practically documentation, what are the rules, what are the regulation, करेक्ट। you are not aware of it. या Okay, so that's why our government has appointed the custom broker agents who acts on behalf of customs eventually, as they are aware of all the rules and regulation. They have exams and everything and they have to pass out and then they obtain a license. ओके, So for license also you have to give the exams. After that only you obtain the so custom license. brokers are the license given by the government only and no Correct, one can do the custom clearance as a private entity. It is the correct, license given by the government as per the correct, exams. Okay. correct, correct. So custom brokers are working on behalf of customs. Okay, so it is their responsibility. Whatever is exporting or you are importing into the country, it is their responsibility whether it is allowed in your country. So there are different types of goods. I'll just tell you in short. Free goods we call, there are restricted goods, there are prohibited goods, and there are some canalized goods. Okay, so accordingly, custom broker clear your shipments and hand over to the forwarder at the Okay. CFS. सो कस्टम ब्रोकर का काम पोर्ट पे ही खत्म हो जाता है जहां तक उन्हें क्लियरेंस करना है। अगर कस्टम ऑफिसर कुछ क्वेरी कर रहा है या फिर शिपमेंट को क्लियरेंस के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कस्टम ब्रोकर का काम बस वहीं तक रहता है, राइट? Correct, correct, ओके, correct. There are some facilities given by government. Some clearances we can do at the port directly, ओके, and some
clearances we have to do in CFS. Okay, so majorly we do LCL shipment clearance in CFSs as well as FCL as well, but some of FCL who has a special permission, we can do the clearance at the port directly itself. Okay. Okay, so further then we require a freight forwarder. Freight forwarder, as per your shipment, whether it is LCL or FCL, they will arrange the ocean freight. If it is LCL, the small shipment cannot go into the container directly. I mean, you cannot own the container. Before going ahead, you are using the term LCL and FCL. So can you tell us in very simplified language that what is LCL and what is FCL container wise? Correct. So LCL is less than container load and FCL is full container load. So LCL is basically a small shipment. Whether you want to export this coffee mug, it will be having like a box, but you cannot get the container for this box, correct? Correct. It is Okay. not Yes. economically So that is called viable. LCL. Okay. So then you have to send this cargo as a consolidated cargo to save your cost. But obviously, because you cannot spend huge money, because to whom you are selling in other country, they will not pay you that cost. You cannot be in the competition only, so you have to think about your costings also. So there are consolidators who take your cargo in consolidated manner, and they arranges, like they get the cargo from different shippers, and they just stuff into the container and they move it to the vessel, and further then vessel reaches your destination. And FCL is like the shipment must Yes. be of full container, right? Yes, FCL is full container load. There is only one buyer and one seller involved. Okay. Yeah. And in LCL, there are multiple buyers and multiple sellers. Because in one container, Yes. we are going to consolidate many LCLs. Correct, correct. Okay. So Okay. that is the difference between So LCL and either FCL it is shipments. LCL and FCL, it gets cleared by the custom broker at the port. Then the next step, it is handed over to the forwarder. So what Correct. is the next process after that? So after that, forwarder seal the container and then they hand over to the shipping line. Okay. As the prescribed time is there, port cutoffs are there, document cutoff are there. So well before time, they have to hand over it to the shipping line. Okay. Then your container loads into the vessel, and then further it moves to the destination. Okay. So as I understood that transporter is responsible for transporting your goods from factory to the port, port to the factory. That is your inland transportation. वहां तक Correct. उनकी जिम्मेदारी होती है. Then custom broker आपका सारा clearance और everything करेगा. And freight forwarder आपके माल को जहाज के through या aeroplane, what is the mode of transportation के through Correct. point A से point B तक पहुंचाएगा. और freight forwarder can connect with all these entities. So Correct. freight forwarder is that bridge which is being used to move your cargo from point A to point B using all these modes. Yes. Correct. Transportation, custom Correct. clearance, shipping line, and destination पे फिर से जाके clearance and to the customer. Correct. Okay. That is how the freight forwarder fulfills all the requirements at a one step. Okay. So customer get one stop solution. One stop solution, right? Yes. So they can get all these services by sitting at home, at their offices, or anywhere else. Because in today's world, every shipper wants a one-stop solution that हमको अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. They don't want to connect separately with the transporter or the custom broker or the freight forwarder. तो freight forwarder आपको पूरा ही एक सारा solution point A से point B में एक package की तरह दे देगा and he will be responsible for everything. Yes, correct. Because eventually, who is sending or who is receiving the goods, they don't want to invest time and money, employees for Right. handling multiple jobs. Okay, so at one stop they get all the solutions, all the updates regarding their shipments. That's what the real world wants today. Yes. Yeah. Correct. So Nitesh, my next question is, what are the common myths related to freight forwarding? So common myths क्या है freight forwarding के? कई लोग बोलते हैं कि freight forwarding expensive है, कई लोग बोलते हैं कि freight forwarding only for large scale businesses है. तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. लार्ज स्केल आप ही सोचो, अगर लार्ज स्केल बिजनेस जो कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स पूरा टोटल वॉल्यूम में भेज रहे हैं, सो उनको फ्रेट फॉरवर्डर की तो बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे कैन गो टू डायरेक्टली टू द शिपिंग लाइन और एनवीओसीसी कंपनीज and directly book their container, as they will get a good rates
with them. So मेरे हिसाब से फ्रेट फॉरवर्डर की जरूरत ज्यादा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को है, जो कि कभी एक कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं, कभी 2 कंटेनर इंपोर्ट करते हैं, कभी छोटा कार्गो इंपोर्ट कर रहे हैं, कभी बड़ा कार्गो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो तब उनको फ्रेट फॉरवर्डर की जरूरत है, क्योंकि उनको डायरेक्टली शिपिंग लाइन हो गया या एनवीओसीसी कंपनीज होगी, वो उनको डायरेक्टली एंटरटेन बिकॉज नहीं उन्हें वेसल में करेगी। एक छोटा सा स्लॉट करेक्ट, बुक करना है, एक स्पेस बुक करना है। करेक्ट। सो उनको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली फ्रेट फॉरवर्डर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्रेट फॉरवर्डर इज हैविंग लाइक मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विद यू नो transporter, custom broker, consolidator. So this is how they, even though shipping lines and NVOCC, because a shipping line or NVOCC can entertain a freight forwarder as they give consolidated volume to them. So either by LCL shipments or either by FCL shipments. So here for small scale industries and medium scale industries, freight forwarder is most useful. Okay. The second myth, as I said, that it is expensive. No, it is not expensive. As just I have explained, they have like multiple contacts. आई थिंक वो उल्टा आपका कॉस्ट सेव करते हैं, बिकॉज आप डायरेक्टली शिपिंग लाइन के पास जाएंगे, शिपिंग लाइन और एनवीओसीसी दे विल नॉट एंटरटेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ वॉल्यूम। सो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर का काम ही ये है डेली बेसिस पे फ्रेट में डील करना। सो दे नो व्हाट इज द करंट मार्केट रेट गोइंग ऑन। Also, these industries can have the option by choosing a multiple freight forwarder. They can get the rates from there and they can compare and they can nominate a particular forwarder. So that is the benefit by choosing a freight forwarder. So मतलब this आप this बोल is रहे हो कि just a फ्रेट myth. फॉरवर्डर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंट से रेट लेंगे और एक बहुत ही अच्छा रेट निकाल के आप शिपर को या कंसाइनी को दे सकते हैं। सो वो Correct. ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा बिकॉज दे Correct. कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द शिपिंग लाइन। Correct. 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 और एक माना जाता है कि सी फ्रेट जो है वो चीपेस्ट ऑप्शन है। यस यस, चीपेस्ट ऑप्शन तो है, बट हर एक प्रोडक्ट के लिए वी कैन नॉट यूज सी फ्रेट, or you cannot send your by sea shipment by everything by sea sea। every time. So it is totally depending on your commodity. Commodity means cargo, आपका क्या माल है, आप क्या भेज रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी फ्रूट्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फ्रेजाइल आइटम्स है, इन चीजों के लिए आपको एयरलाइन चूज करना पड़ता है। कभी कभी कुछ कॉस्टली आपका सामान होता है या आपको क्विकली डिलीवरी देना है, so in that case you have to choose air mode. Okay. So yes, sea freight is cheapest option but not applicable to all the commodities. True. और एक बात मैं सुनता हूँ कि क्यों हम फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाए, सब सेम ही तो है, सबका सर्विस सेम ही है, सब अभी वर्ल्ड वाइड जो भी है सबके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, तो हम क्यों फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाए या फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस क्यों चूज करे, और ये सोचते हैं कि सब फ्रेट फॉरवर्डर्स आर सेम। सो ऐसा नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डिंग ये इंडस्ट्री अभी इतना वास्ट हो गया है कि ईच एंड एवरी कंट्री, हर एक फ्रेट फॉरवर्डर के एक अच्छे रिलेशन बन गए, जैसे उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फिर वो एक दूसरे से मिलने जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेट फॉरवर्डर हु इज इन्वेस्टिंग टू डेवलप ओवरसीज रिलेशनशिप्स। सो आपको ऐसा एक वाइज फ्रेट फॉरवर्डर चूज करना चाहिए जो काफी दिनों से फ्रेट फॉरवर्डिंग में है, काफी दिनों से उसमें मेहनत कर रहा है, और इवेंचुअली उसके सर्विसेज, उसके क्लाइंटेल बेसिस से आपको समझ में आ जाएगा कि whether you're choosing a right freight forwarder or not. So before your next shipment leaves the port, आप अपने आप से पूछिए क्या आपने एक राइट एक्सपर्ट लिया है जो आपकी कार्गो को प्लान कर रहा है, because a right forwarder can make the difference between a smooth sailing and a lost cargo. So this was Anshika Vesh from Abhyaan Shipping Services India Private Limited signing off for today. If you find this information useful for you, please like, share and comment and subscribe our channel.